Assalamu alaikum everybody. आज का हमारा monologue is going to be about planning a successful wedding, not a successful marriage because that takes a whole lot more. After having covered probably thousands of weddings all over the world, we've gained some insights. We have gleaned some pearls of wisdom और आज I'm going to share them with you. इतना हमारा experience हो गया है कि when we go to a wedding and we see the dynamics between the two families, we can tell if the wedding is going to last, marriage is going to last or not. So शादी का जो concept है, that is of two people coming together to spend the rest of their lives together in harmony and in love, which is a long shot. This is probably one of the most important decisions that you'll ever make in your life. Because अगर सही शादी होगी तो ये दुनिया ही आपके लिए जन्नत है, और अगर ख़राब निकल आई तो फिर ये दुनिया ही दोज़ख है, और एंड पे भी दोज़ख ही मिलनी है। बिकॉज जब आप आवाज़ार हो के इधर उधर मुंह मारेंगे तो फिर आखिरत भी ख़राब होती है, एंड ऑफ कोर्स आपकी नस्ल भी ख़राब होती है। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट मैन और वुमेन, दिस इज़ अबाउट marriage. Could be, for either men or women, so it's not a sexist statement. So let's say कि आपने बहुत सोच समझ के एक लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है। खैर, सोच समझ के भी कहना इज़ नो गारंटी, बिकॉज अगर सोच समझ के होता तो जितनी भी लव मैरिजेस occur in West, 50% of them end up in divorce. So this monologue is not about weddings, not against weddings. It is just that you have to be really careful and do the best you can. शादी को चलाने के लिए it's not just the chemistry between the two people. आजकल जो शादी है, it's about ज़रूरियात मेरी नज़र में. It could be financial dependence, it could be emotional dependence, it could be kids के through dependence. So जब तक वो ज़रूरियात पूरी होती रहती हैं, रिश्ता जो है वो बंधा रहता है, वी आर बाउंड इन दैट रिलेशनशिप। एंड जब वो ज़रूरियात ख़त्म हो जाती हैं तो फिर वो रिश्ता भी इवेंचुअली एंड्स अप। एज यू कैन सी, आजकल बहुत सारी शादियाँ आर एंडिंग अप इन डिवोर्स आफ्टर 2 decades ऑफ बीइंग टुगेदर। हमारे ज़माने में ये इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अब पीपल आर रनिंग आउट ऑफ पेशेंस एंड दे हैव अ लॉट मोर ऑप्शंस थैंक टू ऑल दिस सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। तो जो लेडीज़ हैं, दे थिंक कि उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला, बंदे हैं उन्हें लगता है उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला, या उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं है, या देयर नीड्स आर नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ, एंड दे गेट प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस। एंड एज यू कैन सी, टिकटॉक भरा हुआ है, इंस्टाग्राम भरा हुआ है। शादी जो है, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज़। व्हेन वी ग्रोइंग अप, हमारे जहन में वही होता है कि ये होगा वो होगा। इट डजंट हैपन लाइक दैट। It's two families coming together, at least पाकिस्तान में। और हमने ऐसी शादियां देखी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सोशल स्ट्रेटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, लेकिन वो सक्सेसफुल हैं। हमने ऐसी देखी हैं जहाँ पे एक ही लेवल के थे और बहन भाइयों के बच्चों की आपस में शादियां हो रही हैं और वो भी नहीं चली हैं। तो ये नसीबों की बात होती है। बट टू कीप अ सक्सेसफुल मैरिज, वी नीड टू बी सेंसिटिव अबाउट ईच अदर्स नीड्स and to each other's families, or it's a complete ecosystem that needs to be taken care of and nourished at many different levels. So let's say कि आपको एक ideal life partner मिल गया है. So the next thing that's on your mind is when to do the wedding, when to organize the wedding. And normally people do that around Christmas time because all the world is traveling. I don't recommend that at all, because that is the time जब बहुत ज़्यादा rush पड़ा होता है. You want to schedule your wedding when it's not too busy, when the weather is not too cold, it's not too foggy. Around Christmas, New Year time, everything is peaking. Nobody is giving discounts. हर चीज़ आपको मुश्किल से मिलती है। Daylight slot बहुत limited होते हैं। The makeup artists are overburdened, तो हर एक की कोशिश होती है कि बस bride को निकालो, शूट ख़त्म करो, next shoot पे भागो। So I don't recommend that. Of course, सारों की limitations होती हैं with the families coming over on Christmas time. But I recommend Feb or October, November is the best time, considering the workload and the quality of work and attention that you get from the makeup vendors, be it the event planners, be it the makeup artists or photographers. So once you've decided the dates, फिर आप decide करते हैं कि venue क्या होना चाहिए। Lots of people, हमारे clients, they are overseas. जब वो यहाँ पे आते हैं, they don't really have an idea about
कि वेन्यूज़ किधर हैं, कितनी दूर हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस, ट्रैफिक की सिचुएशन क्या है. But there are some venues that we really love और they yield great wedding pictures. उसमें से डिपेंड्स कि आपने मेहंदी वहाँ करनी है, बारात या वलीमा. For मेहंदी और निकाह I highly recommend आसिफ जा की हवेली. It is situated near चूना मंडी बादामी बाग के पास. And it's a girls' school आजकल, लेकिन it also serves as a great wedding venue. It's a beautiful हवेली with arches और वहाँ पे decor is heavenly. और उसके अलावा इस तरह के intimate events के लिए हवेली बारूद खाना is really good. अच्छा, एक other misconception is that people assume कि all the big fat weddings, big budget weddings, they yield the best pictures. That is hardly the case. Actually, it's the opposite. It is the small, intimate events that yield the best pictures, the most memorable moments. So I recommend that you do a limited people who would really be happy to be at your wedding. You only invite them and you don't make a jalsa, you don't make a congregation or hold these small, intimate events that turn out beautiful pictures. So ये कुछ एक दो locations है. उसके अलावा there are lots of farmhouses. बट वहाँ पे वायलेशंस के इशू होते हैं और छापे पड़ते हैं और फॉग में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. तो वी हैव, आफ्टर हैविंग कवर्ड hundreds and hundreds of weddings, we have a whole list of vendors. We've eaten menus जो 25-26-30 हज़ार रुपया पर हेड से लेके I've done events जहाँ पे लोगों ने बारात में मटन खाने के बाद अपनी धोतियों से हाथ धोए हुए हैं. So we have done the whole range. So we have a list of the best vendors, best caterers, best wedding favors, bid boxes, सारा कुछ. And you can tap into our knowledge base by contacting us and we'll get you in touch with them. Going back to the venues, shoots के लिए बहुत सारे venues हैं. Governor House is great. Lahore Fort is great. फिर लोगों ने setups बनाए हुए हैं, हवेलियाँ बनाई हुई हैं. So those are all different options. To me, who is the best wedding vendor in regardless किसी भी field में? I think best wedding vendor वो है, photographer या makeup artist वो है, who tries to do their best and are also sensitive to the client's demands and timeline pressure. Photographers, I know many, they don't deliver timely. मेरे पास messages आते हैं, हमें DM में लोग कहते हैं कि यार we made the mistake of going to so and so, or she did this, she did that, he did that. And that's something I really want to emphasize, that a good wedding vendor वो है that is delivering the best quality work while being sensitive to the client's wishes and demands. Now that also holds for makeup artists. बहुत सारे makeup artists हैं who might be doing the best and they're not sensitive to the client's timelines. जो आपकी shoot है, that is the only time when it's the couple's me time. Once you're at the event, it's about your pupos and tayas and the group shots and rasme, etc. जो couple की shoot है, that is the only time when the couple feel like a rock star or superstars. They are the superstars of their own movie. But there's so many makeup artists who will spend hours and hours keeping the bride waiting and then they leave them 2 घंटे late, 3 घंटे late. और जो उनकी daylight का slot है, जो venue है, 50 हज़ार लाख रुपया दे के उन्होंने slots book किए होते हैं जगहों के, locations के, and they go to waste. There have been so many times I've been waiting at the fort और bride जो है वो अंधेरे में वहाँ आ रही है. The makeup artist ने late कर दिया, बहुत rush था makeup artist पे, मेरी बारी ही late आई. And of course the makeup artist they say कि the bride आई ही late थी, bride हमारे पास आई ही late थी. So I would say कि when you're hiring a makeup artist, make sure you tell them the look that you have in mind and also set a timeline. कि यार मैंने ये मेरा departure time है, इतने बड़ी मेरी shoot है. It's not an open-ended assignment. That is something critical because daylight slots are limited. And what's the point of spending 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh on makeup if you're not getting good memories? आपके पास pictures ही नहीं है to recall of that day. क्योंकि event के ऊपर जो pictures होती हैं वो तो group shots ही होते हैं. And आपने लाहौर फोर्ट book किया हुआ है, आपने गवर्नर हाउस book किया हुआ है, but you don't have any decent pictures. अंधेरे में लाहौर फोर्ट में shoot का क्या फ़ायदा है? लाहौर HSN की अंधेरे में pictures का क्या फ़ायदा है? Though so many times I've done that and I feel bad for the couple. So again,
I emphasize a good vendor वो है who is sensitive to the client's demands and also does a great job. There's a fine balance. You might be the best makeup artist in the world, लेकिन आप bride को 3 घंटे late भेज रहे हैं. It doesn't make any sense. You might be the best photographer in the world, लेकिन आप 2 साल तक आप उनको videos ही नहीं दे रहे, albums ही नहीं दे रहे हैं. What's the point? तब तक तो वैसे ही शादी का जो है नशा टूटना शुरू हो जाता है. So आज के monologue में I talked about the importance of finding the right soulmate. Well, it's a try. Or who is a good wedding vendor? Good wedding vendor is the one, like I said, who does great job while being sensitive to the client's timeline pressure. So in the coming episodes, we'll talk more about how to hire a good photographer, how to hire a good makeup artist. I touched upon them briefly, lekin we'll go more in detail. But this is just a teaser for the upcoming monologues. So stay tuned, folks. हमने बहुत सारा knowledge base इकट्ठी की हुई है, and I'm sure you guys are going to benefit from all the experience that we have gleaned over the years.